The question is 17 tweets जब समझदारी की बात हो रही है, when Mohan Bhagwat ji is drawing the line, drawing the Lakshman Rekha and say that okay, Gyanvapi matter is in the courts, try and sit together, find a solution, and if you can't, listen to what the courts say in their verdict. But to try and find a shivling in every mosque, that's not called for and that should be ended. And he said हम कोई आंदोलन नहीं करने वाले, राम मंदिर का आंदोलन था, अब जो हो रहा है या तो मिल बैठ के कर लो या कोर्ट के थ्रू कर लो. What is wrong in the statement that there is so much of opposition and angst that Mr. Owaisi has found? नाविका, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि क्या मोहन भागवत जी का जो ये स्टेटमेंट है, क्या ये उन्हीं के लोग कर रहे हैं? ऐसा है तो उनके कहने से ये रुक जाएगा? मतलब पहले तो उनको ये क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि क्या ये उन्हीं के कहने से हो रहा है, तो फिर इस तरीके का पब्लिक स्टेटमेंट देने से शायद वो रुकेगा. रह गई बात कि वो जो कह रहे हैं ना, दिक्कत परेशानी उससे ये है कि वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो है पूरा आंदोलन चलाया, जबकि ऑलमोस्ट मैटर तो सब्जुडिस था ही वो. फिर भी आपने उस वक्त तो नहीं माना कि मैटर कोर्ट में है और आपने आंदोलन चलाया, फिर बाद में आप ये कह रहे हैं कि भाई हमको कोर्ट में विश्वास है. तो ये तो स्टेटमेंट आप खुद देख लीजिए. आज अभी वो कह रहे हैं कि कोर्ट में मैटर है, लेकिन उस वक्त भी तो कोर्ट में मैटर था. गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड टू दानिश कुरैशी. Navika, these people are perpetual whiners and they will always be whining, crying. And the larger message that Mohan Bhagwat ji has given, I think there are three very profound, very strong messages. The first is he is emphasized on the unity of the country, which parties like the Muslimin, Asaduddin Owaisi, the Congress party, the self-proclaimed Muslim party, and other parties that indulge in communal politics will not like, because they are all about divisiveness, about spewing venom against the Hindu community. Second message, Mohan Bhagwat ji has very strongly spoken about the diversity, and he believes firmly in the fact that there has been a history, but India has to move forward and the diversity has to be respected. Now, they never expected such a statement coming from people like Mohan Bhagwat ji, because they have been tarnishing the image of RSS. Now, when he is spoken unequivocally for the country, for the unity of the country, they can't accept. And third, I think, is a tight slap on the face of Asaduddin Owaisi, who doesn't respect the court. Mohan Bhagwat ji has clearly said that respect the court of the country. Rahul Gandhi, who compared RSS to LET, also has a lot to answer, Navika.